Okay. Keep reading. Human eye and colorful world. Human eye and colorful world. So first we will study about human eye, then we'll go for colorful world. So because of human eye only we can able to see the colorful world, right? So उसके बारे में human eye के बारे में first we'll learn. देखो आई देखा ना. ओके. सो इसका इसका हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका पार्ट्स क्या है वगैरह पढ़ने वाला है. रियल आई देखा कभी किसी का? रियल आई देखा मतलब एनी टाइम हॉस्पिटल्स ऐसा कुछ में. लास्ट ईयर स्टूडेंट क्लास में सर आई हिज फादर इज आई डॉक्टर ओनली. He brought one of the cancer patient eye. He in class she is showing, sir, my father brought eye of some person बोल के ऐसा दिखा रहा है हाथ में ग्लव्स पहन के. उसका डर डर भी नहीं है. ओके. सो दैट आई एक्चुअली लुक लाइक कैसा है मालूम है? रियल आई का जनरली इसका आई बॉल will look like this. Eye ball. Okay. So this is actual picture. Matlab if you take the eyeball, this they'll place, right. They'll do operations and they'll fix in this eyeballs ka. Okay. Can you tell me इसका diameter कितना होगा normally? Normal human beings में approximately, can you guess? In terms of centimeters में. हाँ. 4, हाँ. 5. 4-5 तो बड़ा है. 4-5 इतना. 2-3 centimeter. हाँ 2 to 3. So it is approximately diameter of the eyeball is 2.3 centimeters. ओके. नो इसके बारे में डिटेल में इसका पार्ट्स क्या है, हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड, ये पूरा डिटेल में करने वाला है. तो इसका साइड व्यू में आपको पिक्चर विल लुक लाइक दिस. ओके. दिस इज द आई का पार्ट्स वी हैव टू लर्न. ओके. सो इसका ईच एंड एवरी फंक्शन वी आर लर्निंग आई पार्ट्स. ओके. सो व्हाट आर थिंग्स आर देयर, यू हैव टू नो द नेम्स. First one, this one top surface is nothing but cornea. This one is cornea. Okay. And next we are going for the aqueous humor. A liquid region है aqueous humor. Okay. Then parts learn करो, then each and every function का will learn. Okay. Then pupil, इसको small hole को we call as pupil. Okay. And इसके ऊपर जो भी है इसको iris बोलते हैं. Iris. Okay. एंड देन इसके पास ये वाला सीलरी मजल्स बोलते हैं, सीलरी मजल्स. ओके. देन एक बड़ा सा है ना, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, लिक्विड है. एंड देयर इज ए ऑप्टिकल नर्व्स एंड रेटिना. रेटिना वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, रेटिना बोलते हैं ना. आई थिंक लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा ना, लाइक 7th और 8th. ओके. सो इसका ईच एंड एवरी पार्ट्स का फंक्शन का वी विल लर्न क्या क्या है. ओके. सो we will see एक एक parts of human eye. लिखो parts of human eye. So first one we are going for cornea. देखो cornea. So cornea क्या है? This thin transparent spherical membrane through which light enters. This is the cornea. This part is nothing but cornea, where the light enters. Outer layer. Okay, our eye का outer layer is nothing but cornea. It is a thin transparent spherical membrane through which light enters. And most of the refraction of light rays entering our eye occurs at the outer surface of the cornea. So light enters, thoda refraction hoga. To most of the refraction will happen at this cornea. So front covering ko we call as cornea. लिखते जाओ.
second part पे देखो, second part is aqueous humor. बोलो ना, a small liquid region है, this is aqueous humor, very sensitive part है आएगा. Okay, it is a clear liquid region between the cornea and the lens. Okay, it maintains correct pressure balance. ये वाला क्या है? A liquid aqueous humor is lying between cornea and the lens. देखो सभी आईज के पास एक लेंस होगा, and that is always convex lens. All आई के पास inside there is a convex lens, and convex lens and cornea का बीच में aqueous humor is there. वो क्या है? It maintains the correct pressure balance, maintain करेगा, pressure balance. So names bits में ये सब कुछ आएगा. Copied? Done? Okay. Next part. Next part will go for iris. देखो iris वाला this part, this one iris है. Okay. ये iris क्या है? It is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. देखो iris के बीच में there is a small hole, empty space, that is called pupil बोलते हैं. उसके बारे में पढ़ेंगे. Pupil है, ये क्या करेगा? Dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. Okay, pupil को size को control करेगा, ये hole को control करेगा, up and down करेगा. Now we'll study about pupil. देखो small hole in the iris, इस iris का small hole in the iris. ये होल क्या करेगा? ये छोटा सा होल क्या करेगा? सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम डार्कर रूम, मतलब इनसाइड वेरी डार्क रूम है पूरा. ओके, एक ही बार बाहर गया, सनी डे में बाहर गया. सो क्या होगा? आप पहले आंख बंद करेगा, सो मच ऑफ लाइट इज कमिंग. आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद यू कैन एबल टू एडजस्ट, यू कैन सी द सराउंडिंग्स. वाई यू कैन एबल टू सी द सराउंडिंग्स? इनिशियली यू कांट एबल टू सी, सडनली ऐसा आंख बंद करेगा, बाद में इट विल टेक, यू कैन एबल टू सी. वाई? चल, ये होल के बारे में बोलने का. ये क्या करेगा? ये होल को पहले ज्यादा लाइट आ रहे ना, इट विल reduce. Okay, reduce, the hole size will reduce, so amount of light entering will be reduced, so you can able to see the outside. Similarly, suppose you are studying night में, suddenly power गया, you cannot able to see surrounding. Initially if you observe, anytime observe, night में suddenly power गया तो you can't able to see anything, but after fraction of seconds के बाद you can see, started seeing there is a table, ऐसे we can able to see. Why? That time क्या करेगा? A hole will be enlarged. Okay, a pupil is not a physical part, just hole को we call as pupil बोलते हैं. Okay, black color part बोलते हैं ना, हम आई में लिखते हैं ना black color वाला, that one is the pupil. वो क्या करेगा? वो hole extend होगा such a way that amount of light entering will be more. That's why night में we can suddenly गया तो भी we can able to see after certain time के बाद. So it regulates and controls the amount of light entering the eye. Very important. Slavia, on the video, Adya, Pasika, on the video. It regulates and controls the amount of light entering the eye. So इधर people क्या लिखेगा? Dash regulates and controls the amount of light entering the eye means iris बोल के लिखेगा. Iris नहीं, pupil. Hole है, वो hole will, उसके वजह से only amount of light is getting controlled. But actually iris का elongation and contraction के हिसाब से only the hole is getting controlled.
but this is the major one. I should say this one, pupil. Pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. Copy it? Yes. Next. Next we'll go for lens. A lens है ना? Which lens it is? Which lens? Eye के पास सभी eye के पास we have convex lens. Okay. So lens के बारे में already we studied convex lens क्या करेगा बोल के refraction wise में. It is a transparent lens made up of jelly-like material. The eye lens forms real and inverted image of the object on the retina. जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना उधर से रेस आकर रिफ्रैक्ट होके फाइनली रेटिना पर गिरेगा एंड रेटिना का पर कौन सा इमेज गिरेगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉल ऑन द रेटिना मतलब इफ यू आर सीइंग ए पर्सन लाइक दिस रेटिना के ऊपर कैसे दिखेगा ऐसे दिखेगा स्क्रीन के ऊपर उल्टा दिखेगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज and this is a convex lens that converges light at the retina. This is responsible to converge because ये converging lens right. So converge करके retina पर गिरने के लिए ये देख लेगा lens. So we studied about cornea, aqueous humor, then we went for pupil, iris, and convex lens. Done ना? Next one. Ciliary muscles. एग्जाम में भी आएगा वेरी इंपॉर्टेंट सीलरी मसल्स देखो सीलरी मसल्स ये लेंस का अटैच रहेगा दिस इज अ सीलरी मसल्स ये लेंस से अटैच करेगा ओके मतलब आपको कॉन्वेक्स लेंस को एलोंगेट भी कर सकते हैं उसको रिलैक्स बोलते हैं रिलैक्स भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं लेंस को एलोंगेट कर सकते हैं और रिलैक्स बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सीलरी मसल्स उसको करने से क्या होगा यू टेल मी ये थिन लेंस है ये थोड़ा मोटा लेंस है फोकल लेंथ किससे विच वन इज लेस फोकल लेंथ विच वन इज लेस विच वन विल लेस एंड विच वन विल मोर फोकल लेंथ मालूम है डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस वन फोकस किससे लेस है The second one? हाँ सेकंड वन फोकल लेंथ इज लेस एंड इसमें फोकल लेंथ इंक्रीजेस ओके सो दैट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके नाउ सीलरी मसल्स क्या करेगा देखो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का कर्वेचर चेंज करने के लिए दिस इज रेस्पॉन्सिबल और देखो व्हेन द मसल्स रिलैक्स्ड वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द मसल्स रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन मतलब देखो सीलरी मसल्स ऊपर खींचेगा एंड इट बिकम्स थिनर ओके दस द फोकल लेंथ इंक्रीजेस उसका बाद थिनर हो गया ना थिनर होने से फोकल लेंथ विल इंक्रीज फोकल लेंथ इंक्रीजेस मींस we can able to see distinct objects clearly far objects we can see focal length increases we can see the far objects okay see हम लोग far objects भी देख सकते हैं near objects भी देख सकते हैं okay why based on the eye का relaxation and contraction के वजह से we are able to see the दूर का objects and नजदीक objects okay now see same way when the muscles contract मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा करने से क्या होगा द लेंस बिकम थिकर बन जाएगा दस द फोकल लेंथ डिक्रीजेस दिस एनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली सो दैट्स व्हाई लेंस इज एक ओनली वी कैन एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स एंड क्लोजर ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ सीलरी मसल्स दैट्स व्हाई यू नो फ्रॉम छोटे से
बहुत ओल्ड होने के बाद डेफिनेटली पीपल का ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ओके 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 सब वीकेंड्स हो जाएगा. Ciliary muscles get weakened. सभी ओल्ड पर्सन को हो जाएगा. दैट्स व्हाई दे विल उसको क्या बोलते हैं ओल्ड करेक्शन उसको क्या बोलते हैं ओल्ड डिफेक्ट को ओल्ड पर्सन को जो आ रहा है ना उसको पढ़ा होगा ना डिफेक्ट. हाँ कैटरैक्ट. कैटरेक्ट बोलते हैं. कैटरेक्ट नहीं है प्रेस बायोपिया बोलते हैं. दैट वन डिफेक्ट्स में देखेंगे आगे का. ओके लिखो जल्दी. फिर नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट इज विट्रस ह्यूमर. इफ यू सी इन एनसीईआरटी में इट इज ब्लू कलर पूरा ओशन जैसा रहेगा इतना बड़ा. उसका काम क्या है विट्रस ह्यूमर. देखो जेली लाइक फ्लूइड विच मेंटेन्स स्पेरिकल शेप ऑफ द आई. आई स्पेरिकल शेप है बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड. बिकॉज ऑफ विट्रस ह्यूमर के वजह से इट इज स्पेरिकल शेप रहेगा. अगर यू इमेजिन देयर इज नो लिक्विड इन दैट क्या होगा हमारा आई ऐसा रहेगा. बार बार कोई आए तो ऐसा घुमा ऐसा उठा के देखना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ द आई इट विल मेंटेन. दैट्स व्हाई ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है. दैट्स व्हाई आई इज सो सेंसिटिव. अगर थोड़ा पिन को भी इधर थोड़ा ऐसा ऐसा किया था कलर्स पूरा लिक्विड आ जाएगा. दैट्स व्हाई वेरी डेंजरस आई से. ओके लिखो विट्रस ह्यूमर. नेक्स्ट वन इज रेटिना. रेटिना you already know it is a screen, right, where image is formed. Light sensitive screen on which image is formed. And उसके ऊपर always real and inverted image only will fall. Okay, so written up. It is a delicate membrane having enormous number of light sensitive screens. So many sensitive screens cells are there actually in that way. So what it will do, we'll see. The light sensitive cells gets activated upon illumination and generate electrical signals. When the light falls on these cells, वो क्या करेगा? It will converts into electrical signals, and these electrical signals passes through the optical nerves. That we'll see. Okay, we go. ये cells लिखो, light sensitive cells.
number of light sensitive cells, and these light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. A cells का वजह से only it will generate electrical signals. भवन लिख रहे हैं. Yes, sir. डायग्राम में आउटर लाइन का ड्रॉ करना सीखो ऑलवेज, बिकॉज डिफेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा शेप वगैरह ड्रॉ करना सीखने का. ओके, चलो फिनिश्ड. Sir, in which is in vitreous humor are cone and rod cells present? हाँ, विट्रस ह्यूमर नहीं, विट्रस ह्यूमर इज जस्ट लिक्विड. इसमें है रेटिना पर, रेटिना में है सेल्स है ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स में, उसमें है द रॉड एंड कॉन सेल्स. नेक्स्ट टॉपिक विल बी देयर. हो गया. Yes, So sir. we have types of light sensitive cells. Okay, first one is rod shaped cells. Okay, so rod shaped cells क्या करेगा, which respond to brightness or intensity of light. These cells are responsible for intensity of light or brightness of light. Suppose मान लो, if a person don't have rod shaped cells, ओके, उसके ऊपर लाइट डालो, इतना बड़ा लाइट डालो, वो तो एंजॉय करेगा. हाँ, डालो और डालो और डालो बोलेगा. उसका उसका कुछ सेंसिटिव नहीं है, ब्राइटनेस का कुछ पकड़ने नहीं है, वो बहुत एंजॉय करेगा. बट वो सेल्स है तो वो ब्राइटनेस को बोलेगा नो नो नो, डोंट पुट, बिकॉज वो अगर वो डालने से क्या होगा, उसका रेटिना पर डैमेज होने के चांसेस आर देयर. दैट्स व्हाई दिस रॉड सेल्स आर विल हेल्प यू टू स्टॉप द ब्राइटनेस. ऐसा पकड़ेगा, हाथ रखेगा. एंड नेक्स्ट वन इज कोन शेप सेल्स. ओके, कोन शेप सेल्स क्या है, विच रेस्पॉन्ड टू कलर ऑफ लाइट. कलर ऑफ लाइट को रेस्पॉन्सिबल है. ओके, दैट मीन्स if there is no cone shaped cells, we cannot able to identify color. You know, once upon a time, you know, my friend and I'm going, he's driving, I'm sitting at the back. He stopped at the signal lights, and he's telling you know, एक बार लाइट आने के बाद बोलो we have to go, ग्रीन लाइट आने के बाद बोलो we have to go बोल के बोल रहा है. अरे क्या हो गया, स्पेट्स भूल गया क्या? I asked. No, my eye problem, I can't see, color blindness, so he cannot able to identify anything. मतलब कोई भी मूवी देखो, even if you go for a shop also will tell which color it is. So that is पूरा black and white दिखेगा, पूरा black and white उसको, मतलब because of this cone shaped cells are not there उसके पास. Okay, so bits में this type of questions also they'll ask, which respond to color of light and which responds to brightness or intensity of light. तो सेल्स है ना, रेटिना के पास होगा सेल्स, एंड ये सेल्स क्या करेगा, इट इज कन्वर्टिंग द लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. कॉपीड. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑप्टिकल नर्व्स. ये क्या करेगा, सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन. ओके, दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज पासिंग थ्रू द ब्रेन,
and the brain interprets these signals and finally process the information so that we can perceive objects as they are. So आपको आई में आपको इधर आई टोल्ड यू, इफ यू सी द पर्सन आपको उल्टा दिखेगा ना. So then whether you can able to see the ulta person like this normal आपको सीधे दिख रहे हैं ना, वो कैसा हो रहा है? Because these light signals are converted to electrical signals and passing through optical nerves and it will be attached to the brain. ब्रेन क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा. वो छोटे से लर्निंग होगा ना, ऐसा पर्सन है, दिस कॉल एप्पल, इसको इसका वो देख के इट विल कन्वर्ट्स, ब्रेन विल कन्वर्ट्स इनटू द रियल एंड वर्चुअल, मतलब वर्चुअल इमेज जैसा सीधा दिखेगा आपको. दिस ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल. मतलब suppose that means you are able to see the persons means you have brains. पक्का you have brains because you can able to see, right? ओल्ड आदमी सब some people को ब्रेन है तो वो बोलेगा ऐसा देखेगा, अरे उल्टा दिख रहा है क्यों ऐसा बोलेगा. Why? Because of this all things. Okay. So मतलब कोई भी कनेक्शन इधर कट हो गया तो कलस. Major important thing is ciliary muscles का they will ask questions and रेटिना पर कौन सा इमेज आएगा बोल के they will ask, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोल के बोलने का जनरल नो ब्रेन वगैरह एंड सेल्स के बारे में समटाइम्स they will ask. I will ask the names serial order में बोलने का. पढ़ो एक बार. I'll ask. You have to start from cornea and with the last में optical nerves and brain. ये ऑर्डर में जाओ ऐसा. याद हो गया किसको? याद हो गया? Should I ask anybody? रीडा. सारे आपको आता है? आ गया नेम्स? ओके करो. So you're gonna ask questions. Yeah, you have to tell the names. हो गया तो बोलो. हो गया? Oh, Yes, Akash. Eyes close and tell. Okay, sir. Cornea, aqueous humor, iris, pupil, crystalline lens, ciliary muscles, vitreous humor, retina, optic nerve. Yes, very good. Okay, anybody? Ask क्या हो गया? No, sir, 1 second. Yeah. Sir, done. बोला bro. Eyes close and tell. Yeah. Cornea, iris, pupil, aqueous humor, crystalline lens, ciliary muscles, vitreous humor, optic nerve, retina. Okay.
जल्दी नथिंग हो गया. Yes, अरे, sir. या साव्या श्री हो गया. बोलो, ट्राई करो. Cornea, aqueous humor, iris, pupil, crystalline lens, ciliary muscles, vitreous humor, retina, and optic nerve. यस, मान्य हो गया. हाँ, साव्या कम ऑन जल्दी. तो हमारा आई के बारे में ना नॉर्मल पार्ट्स मालूम है ना. बोलो बोलो, ट्राई. कॉर्निया, can't able to hear. I think your mic gone, Savya. I can't able to hear. Anybody? Siddharth, हो गया? Bhavani? No, sir. Sir, Now okay. you will tell everything, right? Now you can Sir, tell everything. wait, sir. So, cornea, aqueous humor, iris, pupil, lens, crystalline lens, ciliary muscles, vitreous humor, retina, and optic nerve. Optical nerves. Yeah. Adya? Sir, I'll try. हाँ, ट्राई किया. गुड, बोलो. मतलब उधर अनम्यूट बटन रहेगा, वो प्रेस करने के बाद बोलते अच्छा रहेगा. हाँ. Cornea, iris, pupil, crystalline lens, aqueous humor, vitreous humor, retina, optic nerve. यस. हाँ, सभी आप भी ट्राई करेगा. अरे, ये तो देखा होगा ना कि इधर आंसर पूछे तो समथिंग आई कांट एबल टू टॉक बोल के ऐसा रहेगा. आई कांट एबल टू हियर. ओके, अम्मा ने ट्राई करो. Sir, आप cornea. ये काम करो, उल्टा बोलो. आपको तो उल्टा बोलो. हाँ, Sir, मतलब ulta. ऑप्टिकल नर्व से स्टार्ट करो एंड कम टू कॉर्निया. Sir, optical nerve, retina, vitreous humor, ciliary muscles, या. lens, iris, यस. pupil, हाँ, and cornea. कॉर्निया. हाँ, गुड. ओके, चलो. हासिका नॉट देयर. Yes, sir. हाँ, मेरे कितना टाइम लगेगा? हो गया. Yes, sir. हाँ, मेरी ऑन करके बोलो. हाँ, बोलो. Okay. Cornea, aqueous humor, iris, pupil. I'm not looking. Okay. Iris, pupil, lens, vitreous humor, retina, and optic nerve. Okay, चलो. Now we'll talk about power of accommodation. Power of accommodation. What is power of accommodation means? The ability of the eye lens to adjust its focal length is called as power of accommodation. वो लेंस कितना adjust कर सकती है. I told you, relax बोले तो focal length increases and contract बोले तो focal length decreases. कितना maximum minimum रहेगा ना? That is called power of accommodation. So minimum and maximum के बीच में उसको power of accommodation बोलते हैं. Every lens has a power of accommodation. Okay. In this way, we have to know about near point. What is near point? Near point means the minimum distance at which the object can be seen more distinctly without strain is called near point. मतलब क्या है? Suppose एक object is there. I can see this object, or you can see the letters, right? Book को ऐसा रखो initially. I can see the letters. Okay. If I go on keeping नजदीक में, I cannot see, right? At this distance I cannot see, right? Minimum distance which without strain wala, scientist has discovered that it is how many centimeters? Can you guess? 5. 25. Very good, Abba. Very good. Near point is 25 centimeters. Likho. That is called near point.
Okay. Yeah. Next, we'll go for far point. Far point means the farthest point up to which I can see objects clearly is called far point. And far point will be how much? Near point 25 centimeters. Far point below? It should be infinity. Infinity. What is meaning of infinity means? Like keeps going till. ऐसा नहीं है. Infinity means एक एक person का एक एक का रहेगा ना. So exact distance is not measured. So we can say infinity based on the person's का हिसाब से. Okay. So far point is infinity for a normal eye. So what does it mean for normal eye? Normal eye means without any defect. Like now we are dealing defects also. Writing notes, right, Abhiram? Notes लिखो अच्छे से. Notes only will help you. Last में revision में test में वगैरह अच्छा रहेगा. चलो. Then next we will go for defects of लिखो. Defects of vision बोल के लगाओ heading. Defects of a vision. Okay. On that में first one is myopia. First one is myopia. Or we can call nearsightedness. Myopia is called nearsightedness. So what is meaning of nearsightedness means? But the person can see what and person cannot see what? Near objects or far objects? Myopic person. You can only see near objects. Yeah, he can always see near objects. He cannot see far objects. नेम को पीपल को नियर साइडेड मीन्स वो लोग सोचेगा नियर का दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है. नियर साइडेड मीन्स नियर ही कैन सी, फार वी कैन नॉट सी, राइट. So I also having myopia. Generally we have myopic persons only generally. Okay. So a myopic person can see nearby objects clearly but cannot see distinct objects clearly. That is called myopic person. Okay. Image is formed in front of retina. क्या होगा myopic person का without spectacles? क्या होगा? He cannot see, right? So why he cannot see? Image should fall on the retina, right? So retina क्या? Retina है तो the image is formed here. It will not formed on the retina. On the retina पर गिरेगा नहीं, इधर before retina पर आएगा image. So that's why we cannot able to see. उसको correction करना पड़ेगा. We have to bring this image push up to the retina. Then only we can able to see. Okay. So in front of retina. And those are causes. क्या देखेंगे? Causes. Everybody know what is the causes of myopia? The cornea is too curved. Okay. Next, any other? Okay. So excessive curvature of the eye lens. Eye lens है ना, excessive curvature ज्यादा है eye lens. Then we can get myopia. And दूसरा elongation of eyeball. Eyeball elongation हुआ तो भी ये myopia आने के chances ज्यादा है. Exactly लिखना पड़ेगा. Excessive curvature of eye lens and elongation of eyeball. So what do you mean by elongation of eyeball? Eyeball, I showed at starting में eyeball 2.3 centimeters वाला. Yes, sir. वो थोड़ा ज्यादा है तो कुछ elongation हुआ तो myopia आने के chances ज्यादा रहेगा. मतलब exact spherical नहीं रहे तो भी will get chances of having myopic person. ये वाला आई लेंस वाला जो लेंस है ना इधर लेंसेस का, इसका कर्वेचर ज्यादा है तो भी we get myopia.
copied? Yes. Now इसका correction देखेंगे. How to correct? How to correct myopia? We are wearing spectacles, right? कौन सा spectacles है? Our spectacles are convex lens है, concave lens है. Which one? आप लोग जो यूज कर रहे हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है? आप जो यूज कर रहे हो, आई एम टेलिंग, वो यूज कर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है? Concave. कॉनकेव देखो, इनसे इनसे देखने से ऐसे थोड़ा कर्वेचर रहेगा, कॉनकेव. ओके, सो दिस विल हेल्प यू. दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय ए कॉनकेव लेंस ऑफ suitable power will bring the image back to the retina. Because why we are using concave? Concave is a diverging lens. वो डाइवर्ज करके उसको उसको पुश करके इमेज रेटिना पर गिराएगा. ओके, सो दिस इज द करेक्शन. कॉनकेव लेंस वी यूज. तो ये डायग्राम्स, इसमें क्या है, डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट. डायग्राम्स में दे विल टेल, हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आर देयर. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसका करेक्शन, बिफोर करेक्शन, आफ्टर करेक्शन, दे विल टेल टू ड्रॉ द पिक्चर. ओके, एग्जैक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो, इट इज ए फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन. मतलब सी, वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स, राइट? नियर ऑब्जेक्ट्स, राइट? हमारा विदाउट स्पेक्टिकल्स वी कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स. सो नियर ऑब्जेक्ट्स मीन्स अप टू सर्टेन डिस्टेंस तक दिखेगा ना. दैट सर्टेन डिस्टेंस को वी कॉल एज फार पॉइंट. फार पॉइंट में डायरेक्टली देखो, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. फार पॉइंट तो में पर्सन, मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट मीन्स अप टू, मान लो इधर तक दिखेगा. So this is the far point. Far, मतलब last point where he can see. That's why देखो, far point of myopic eye, he can able to see the image because it is falling on the retina. So 3 diagrams रहेगा. Normal वाला, without correction, with correction वाला. Draw करो. एग्जाम में क्या मैसेज करेगा? पीपल ड्रॉ करेगा ऐसा, ये पैरेलल ड्रॉ करेगा ऐसा ऐसे ऐसे करके, समथिंग समथिंग करके, ऐसे ऐसे करके, वो रॉन्ग हो जाएगा. पैरेलल में ये डाइवर्ज, ऐसा ऐसा होने का. सेम सेम ड्रॉ करो, डोंट ड्रॉ पैरेलल वगैरह, समथिंग समथिंग. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट 2 लाइंस, 2 डायग्राम्स आर देयर. देखो, मायोपिक आई का, मायोपिक आई आई टोल्ड, राइट? बिफोर रेटिना द इमेज इज फॉर्म्ड. इधर ही कन्वर्ज हो जा रहा है. नॉर्मल देखो, आई के पास लेंस होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, ये सीधा आ रहे, आके कन्वर्ज होके मीटिंग इन वन पॉइंट बिफोर रेटिना. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एबल टू सी. ओके, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. उसके लिए करेक्शन क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस क्या होगा? ये पैरेलल रेस आएगा ना, डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होके देन कन्वर्ज होगा, देन मीट एट दिस पॉइंट. सी, बिफोर अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस रखूंगा, फिर से कन्वर्ज होके और भी कन्वर्ज होके, इट विल मीट मे बी हियर. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो कॉनकेव लेंस यूज करने से डाइवर्ज बना के देन कन्वर्ज कर रहे हैं, देन इट फॉल्स ऑन द रेटिना. ओके, सो ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लो. So 3 diagrams are there. Majorly they will ask myopic eye का and correction का. They will tell to draw. Exact same to same draw कर लो. It's chapter theoretical topic है, but myopia and hypermetropia में some numericals are there.
That is based on the lenses we are using, right? Lens formula का base only we are there. वो एग्जाम्स में आएगा, वो मिस्टेक करेगा स्कूल पीपल. ओके. Diagram done. Done. Okay. Seriously done. Diagrams. Yeah. Next one will be hypermetropia. Hypermetropia. Exactly इसका उल्टा. Okay. उसको which sightedness we call hypermetropia को? Long. Okay. Farsightedness. Okay. Farsightedness. वो डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में है. ये डायग्राम्स एक बार नीटली ड्रा कर लो अगर मिस हो तो. ओके. फार साइटेडनेस ये स्पेशल पीपल है. दूर को दिखेगा, नजदीक को ना दे, नॉट एबल टू सी. स्पेशल राइट. नो दूर को दिखेगा, नजदीक दिखना ही दिखेगा. ओके. फील वगैरह क्यों बोल के. ओके. चलो लिखो. ए हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सी far objects clearly but cannot see nearby objects clearly. Exactly myopia का उल्टा लगाने का. Okay. The near point of the eye moves away, so near point will not be like 25 centimeters for him. So it moves away. So image is formed behind the retina. Retina cross करके image is formed. Myopia में क्या होगा? Before retina image is formed. इसका तो क्रॉस हो जाएगा. रेटिना क्रॉस करके इमेज इज फॉर्म्ड. तो इधर इमेज फॉर्म्ड. ऐसे approximately image is formed at outside the retina. Now causes क्या है जनरली? Focal length of the eye lens becomes too long. फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो गया तो हाइपरमेट्रोपिया आने के चांसेस आर देयर. एंड दूसरा, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल. व्हेन द आई बॉल इज वेरी स्मॉल, hypermetropia. Generally
यू नो स्मॉल चिल्ड्रन को भी बाय सीइंग वी कैन टेल फ्यूचर में अगर साइट आया तो विच डिफेक्ट ही विल गेट, मायोपिया ना हाइपरमेट्रोपिया, कैसे पता चलेगा? बाय सीइंग द चाइल्ड, हाउ कैन वी टेल दैट इफ वी गेट डिफेक्ट ही विल गेट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बोल के, कैसे पता चलेगा? नथिंग बोलो, हाउ विल नो? बाय सीइंग अप्रोक्सीमेटली आई बॉल साइज का, जनरली पर्सन थोड़ा आई बॉल बड़ा है तो वो लोग को क्या होगा, मायोपिया आने के चांसेस आर देयर। ये चाइनीज पीपल में होता है ना, छोटे 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 आईज होते हैं ना, छोटे छोटे, उन लोगों को ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया चांसेस आर देयर। ओके, रिमेंबर करने के लिए बोल रहा हूँ, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल देन हाइपरमेट्रोपिया चांसेस आर देयर, मोर चांसेस आर देयर। एंड इसको करेक्शन करने के लिए वेदर वी हैव टू यूज कॉनकेव लेंस कॉन्वर्ज कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज रेटिना का आउटसाइड आ रहा है, सो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से पहले कन्वर्ज होगा, सेकंड आवर आई के वजह से दूसरा भी कन्वर्ज होगा एंड इट विल फॉल ऑन द रेटिना। कॉपी क्लियर? ओके, Yes, sir. करेक्शन लिखो, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो इसका डायग्राम्स आप एनसीईआरटी में एक बार 3 डायग्राम्स आते हैं, 3 डायग्राम्स कॉपी पेस्ट करो। ओके, नेक्स्ट क्लास में कॉपी करो। देखो, दिस इज अ नियर पॉइंट, मतलब ही कैन सी, he cannot see the near objects but he can see the far objects, right? So this is, मतलब इधर से स्टार्ट होगा, इधर से we can see, right? So that is a near point of the hypermetropic lens. देखो exactly image is formed on retina, first diagram में, first diagram he can see वाला एनसीईआरटी में कॉपी करो, वो नोटबुक में कॉपी करके नेक्स्ट क्लास में दिखाओ। ओके, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रिक आई, एंड देखो हाइपरमेट्रिक आई में इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, क्रॉस कर देगा, रेटिना से क्रॉस हो जाएगा, सो इमेज वी कैन नॉट एबल टू सी। सो उसके लिए हम लोग क्या करने वाला है, वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। करेक्शन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यूज। ओके, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से क्या होगा, इधर पहले कन्वर्ज होगा, अगेन इसके वजह कन्वर्ज होगा एंड फाइनली फॉल ऑन द रेटिना। तो 3 डायग्राम्स आप एनसीईआरटी में पूरा ड्रॉ करके दिखाओ। ओके